जो कौम अपनी तारीख़ भूल जाती है वो कौम तारीख़ बन जाती है। सबसे बड़ी ट्रेजेडी इस कौम व मिल्लत के साथ ये है कि आज इस कौम की नौजवान नस्ल और उसके बुज़ुर्ग भी अपनी ख़ुद की हिंदुस्तान की जो आज़ादी में जो जद्दोजहद मुसलमानों ने की है उस तारीख़ से आज महरूम हैं। हम अपने बच्चों तक वो तालीम पहुंचा नहीं पाए जिसमें हम अपने बच्चों को वो तालीम दे पाएँ कि हमारी हिंदुस्तान की इस आज़ादी में हिंदुस्तान की जद्दोजहद रही है, जो फ्रीडम स्ट्रगल रही है, इसमें मुसलमानों का जो कंट्रीब्यूशन रहा है। हाँ, किसी मेंबर से कभी किसी खिताब पे कोई हज़रत बता देते हैं, लेकिन वो कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं होती, कहीं पे कोई ऐसा तरीक़ा नहीं है हमारे पास जहाँ पे इसको बार बार दोहराया जाए ताकि ये बात ज़हन नशीन हो जाए। एक छोटी सी कोशिश जहाँ पे मुस्लिम फ्रीडम फाइटर्स के लिए ख़ास तौर पे on the occasion of 75 years of independence of this country, we have shortlisted 75 Muslim freedom fighters from across the country, and those freedom fighters are now going to be displayed in a grand manner, not only in Bangalore. It is going to be a gallery where all the Muslim freedom fighters will be showcased with their contribution and the sacrifices. This is not going to be done only in Bangalore, rather different districts of Karnataka state, around 12 districts of Karnataka state, at the very same time parallelly it will be organized. And during this gallery we want to showcase the sacrifices of the Muslims in the freedom struggle. Alhamdulillah, I've got a great response, not just from different districts of Karnataka, but from Kerala, where we are able to organize this gallery in Wayanad, in Chennai. We are able to organize in Telangana and Andhra, at many different places, in Delhi as well. It is a very small contribution from Falcon Foundation to make sure that we don't forget our own past, and our rich history is being sidelined or undermined in the recent narrative with a bigger agenda from the vested interest. But it is our personal responsibility that we take our measures and in a corrective manner and take this message across the country, and it become a great opportunity for us to call all the youngsters, Muslim, non-Muslim, everybody to this gallery which we are organizing, and we can send a positive message against the wrong narrative which has been set by the establishment of today.